તો સંજય રાઉત કરી રહ્યા છે પ્રેસ કોન્ફરન્સ આવો જોઈએ। बेकायदेशीर सरकारचं प्रतिनिधित्व करताय, नैतिकता असेल थोडी तरी आणि खोक्यांची पापं धुवून काढायची असतील तर सरकारनं ताबडतोब राजीनामा द्यायला हवा। मी इतकंच म्हणतो, आमच्यासाठी सगळ्यात दिलासादायक कोणते असेल तर सत्ता नसून शिवसेनेवरचा दावा फेटाळला हे आमच्यासाठी आनंदाची गोष्ट आहे। सत्ता येते सत्ता जाते, पण बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना याच्यावरती कोणी आयरा गैरा लफंगा चोर दरोडेखोर हा धनुष्यबाणावर आणि शिवसेनेवर दावा करू शकत नाही, ही आमची भूमिका होती आहे आणि सुप्रीम कोर्टानं त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केलेलं है। बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर आप निर्णय देखें तो हम खुश हैं कि देश में लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था आज भी जिंदा है। संविधान मरा नहीं है या कोई संविधान की हत्या नहीं कर सकता। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो शिंदे गुट का व्हीप है वही गैरकानूनी इलीगल है, उसका मतलब है वो लोगों ने जो व्हीप बजाया था वो गैरकानूनी है, और हमारा जो व्हीप था उसने जो आदेश दिया है वो कानूनी है। वो उस व्हीप के मुताबिक तो सब लोग अभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार है, ठीक है, लेकिन लीगल व्हीप कौन है? प्रभु है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, तो क्या विधानसभा के अध्यक्ष गैरकानूनी काम करेंगे? क्या संविधान की हत्या करेंगे? नहीं, पण एखादी मुदत त्यांना बरोबर आहे। लवकरात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सगळ्या घडामोडींवर लक्ष आहे आणि विधानसभेचे अध्यक्ष या डॉक्टर आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये संविधानाची हत्या करू शकत नाही। नैतिकतेच्या मुद्द्यावर ताबडतोब मुख्यमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या सरकारनं राजीनामा द्यायला पाहिजे, उगा टाळ्या वाजवत बसू नये। राज्यपालांची प्रत्येक भूमिका बेकायदेशीर आहे। सर, आपने जो पॉइंट रखा है वो शिंदे सरकार आता तरी कायम असल्याचं दिसतं। अरे सोडा हो, कायम बेम कसलं आहे, गेलं ते सरकार। राउत सर, आपने जो पॉइंट रखा है उद्धव ठाकरे अगर रिजाइन नहीं देते तो ये बात सही है, कानूनन मुद्दा है कि उसका ही मतलब है अभी की सरकार गैर कानूनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि अगर उद्धव जी ने नैतिकता के आधार पर रिजाइन किया है, इस्तीफा नहीं देते, तो आज हम उस स्थिति में होते कि उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री के तौर पर फिर एक बार स्थापित करते। उसका मतलब है जिस तरह से सरकार नई सरकार बनाई ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और संविधान के खिलाफ बनी है। नहीं है तो स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर निर्णय नहीं दे सकता। तो कोर्ट को लगा कि ये गलत है, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो उन्होंने ये लार्जर बेंच के लिए भेजा है। लेकिन लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी और उसका डिसीजन आने में कम से कम 1-2 साल लगेंगे। तो ये आगे के केसेस के लिए काम आएगा, इस केस के लिए नहीं। सर, एक अलग से बाइट लेने We'll get to know when the judgment is out. These are the preliminary. Yes. How has the court then said that the Eknath Shinde government could have taken oath? No, they have taken oath because there was nobody at that time, and they have simply said that the decision to call for this for the forming of the government which was decided by the governor was not in accordance with law. Sir, on Uddhav Thackeray, what did the court The court has clarified that had Mr. Thackeray would not have resigned, then in that scenario, status quo ante would have been granted. But now, since he had resigned himself, therefore court can't do anything. The court also basically stated if Uddhav after Uddhav resigned, then it was absolutely legal to call in for a floor test by the governor. That I could not hear. Once the judgment is out, we'll clarify. Just to clarify, what has the court said regarding the role of the governor? It said that the governor should not have taken into account because there was no objective material on the record. So effectively what the Shinde faction MLA said was not objective material to topple the government, but because the government resigned by itself, therefore they will not get any relief. That's what I can understand. Once the judgment is out, we'll clarify. With regards to the whip, the Supreme Court had certain observations. So on the issue of whip, yes. On the issue of whip, that was I'll answer this question first. On the issue of whip, the court has said that the whip of the political party will be given primary consideration. But at this point of time, then who will be the new whip will be the What's your name? Abhikal. आप किसके तरफ से
वो रहेंगे, अभी एकनाथ शिंदे ही सीएम। Leaders coming out now. આવ્યો છે જેને લઈને અનેક બાબતો પણ સામે આવી રહી છે. ઉદ્ધવે રાજીનામું આપ્યું એટલે હવે કંઈ ન થાય તે પ્રકારનું નિવેદન શિંદેના વકીલ દ્વારા આપવામાં આવી રહ્યું છે. ત્યારે મહત્વનું છે કે શિંદે સરકાર ગેરકાનૂની છે તે પ્રકારનું નિવેદન સંજય રાઉત દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે. શું શિંદે સરકાર સંવિધાનની હત્યા કરી રહી છે? આવા અનેક પ્રશ્નો પણ ઉઠી રહ્યા છે. ત્યારે સુપ્રીમે ઉપરી બેન્ચ પર ફેસલો છોડ્યો છે. આ પ્રકારનું નિવેદન વકીલ દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે. મહારાષ્ટ્રનો ફેસલો મોટી બેન્ચને મોકલવામાં આવ્યો છે અને તેને લઈ અનેક પ્રશ્નો પણ ઉઠી રહ્યા છે. ત્યારે ઉપરી બેન્ચ ઉપર આ ફેસલો છોડાયો છે તે પ્રકારનું વકીલો દ્વારા પણ નિવેદન સામે આવી રહ્યું છે. સુપ્રીમે ઉપરી બેન્ચ પર ફેસલો છોડી દીધો છે જેને લઈ અનેક પ્રશ્નો પણ ઉઠી રહ્યા છે. સાથે સાથે ઉદ્ધવ સરકારના રાજીનામાને લઈને પણ અનેક બાબતો સામે આવી રહી છે. સુપ્રીમે ઉપરી બેન્ચ પર ફેસલો છોડ્યો છે તે પ્રકારનું નિવેદન વકીલ દ્વારા પણ આપવામાં આવ્યું છે. ઉદ્ધવે રાજીનામું આપ્યું એટલે હવે કંઈ જ ન થઈ શકે તે प्रकार सुप्रीम माध्यमातून मिळालं. आपण कसं बघता या सगळ्या निकालाकडे? आज जो ऐतिहासिक निकाल लागला त्यामध्ये आम्हाला जी अपेक्षा होती की आज 16 आमदारांचा निकाल हा सुप्रीम कोर्टाकडे सुप्रीम कोर्ट स्पीकरकडे वर्ग करेल आणि तसंच घडलेलं आहे. आणि आज जो त्यामध्ये काही गोष्टी होत्या तो पूर्ण निकाल आल्यानंतर ते कळेल. परंतु आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब आणि आदरणीय उपमुख्यमंत्री साहेबांनी जो निर्णय घेतलेला होता तो निर्णय योग्य होता हेच आज सुप्रीम कोर्टाच्या मार्फत सिद्ध झालेलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने असंही म्हटलं की उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला त्यामुळे आता या संदर्भात सरकार पुनर्स्थापित करता येऊ शकत नाही. त्यांनी राजीनामा दिला कारण त्यांच्याजवळ मेजॉरिटी नव्हती म्हणून त्यांनी त्यावेळेला राजीनामा दिला. आणि जे काही त्यावेळेला घडलेलं आहे ते आता ते घडू शकत नाही. आणि मेजॉरिटी आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या बाजूनी होती, पक्षामध्ये सुद्धा होती आणि सरकारमध्ये सुद्धा होती. त्यामुळे आम्ही सरकार बनवलं आणि आज त्या सरकारला सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केलं. यामध्ये अनेक ताशेरे नेमण्याचा जो विषय आहे कोर्टाने अनेक निरीक्षण आणि ताशेरे पण ओढले. ते सर्व त्यांनी जे निरीक्षण नोंदवलेलं आहे किंवा त्यांचा जो पूर्ण रिझल्ट वाचल्यानंतर તો મહારાષ્ટ્ર સરકારને લઈને અનેક બાબતો સામે આવી રહી છે. શું શિંદે સંવિધાનને લઈને અનેક પ્રશ્નો અત્યારે ઉઠી રહ્યા છે. દિલ્હી સરકાર જો ઉદ્ધવે રાજીનામું ન આપ્યું હોત તો સરકાર યથાવત રાખી શક્યા હોત અને શિંદે જ મુખ્યમંત્રી રહેશે એ પ્રકારના નિવેદનો સામે આવ્યા છે.